कॉर्पोरेट राज में आज हम बात कर रहे हैं गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स की। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स और स्पेशलिटी केयर इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली एक कंपनी, दुनिया की इनफैक्ट दिग्गज कंपनी है। इसका पूरा फोकस होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर है। और अगर हम देखें तो गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स 2 से 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ बनाती है और कंपनी के पास 7 अत्याधुनिक प्लांट भी हैं, 5 भारत में है, एक प्लांट इजिप्ट और यूएस में है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे कंपनी के ईडी एंड सीओओ मिस्टर के नटराजन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से सर इस वक्त क्या लग रहा है, क्या वॉल्यूम एस्टिमेट्स कर रहे हैं फॉर FY23 एज वी स्टार्टेड द ईयर? सर नमस्कार सौदी, शुक्रिया आपके शो में मुझे लाने के लिए। डिमांड का जो इश्यू है वो तो कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस इंक्रीज पास ऑन हुआ है कंज्यूमर लोगों को, तो इससे अभी डिमांड इम्पैक्ट तो नजर आ रहा है, बट काफी क्लैरिटी आएगा एक क्वार्टर एंड के बाद कि कैसा ट्रेंड होगा ये बरस का वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर। तो हमें शायद वेट करना पड़ेगा, बट सर्टेनली वी डू सी राइट फ्रॉम Q4 of last financial year that there seems to be demand getting impacted because of the commodity price inflation. ओके, श्योर। तो सर ऑफ कोर्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखे गए हैं, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है अगर हम कमोडिटी प्राइसेस की बात करें। आगे ट्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो एक प्रेशर बरकरार रहेगा ये पूरे साल? फर्स्ट हाफ कहाँ पे ज्यादा दिक्कत दिखती है? हम तो चाहेंगे कि ये बरकरार रहे, ये जो अभी करेक्शन हो रहा है, बट गिवन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड द वे द सप्लाई साइड इज बिहेविंग, तो हमें शायद ये अगर ट्रेंड और 1 महीना सस्टेन होगा जो अभी करेक्शन हो रहा है, तो उससे कुछ आइडिया मिल सकता है कि ये शायद ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है इन टर्म्स ऑफ प्राइस करेक्शन। तो रुकना पड़ेगा, काफी करेक्शन हुआ है इफ यू सी वेजिटेबल ऑयल्स एंड आल्सो crude petroleum and even metal. So I think it is good that it is correcting, but we need to wait for some more time to come to a clarity whether this will sustain. ओके, श्योर सर। तो प्रोजेक्शंस उसको मद्देनजर रखकर प्रोजेक्शंस क्या है इस साल के लिए? सर आपको क्या लगता है मॉडेस्ट ग्रोथ में कहाँ कंपनी रीच कर सकती है? क्या टारगेट है अगर इस साल का अगर हम बात सोचें तो? हमारा तो टारगेट है कि टिपिकली वी हैव बीन ऑलवेज गाइडिंग द मार्केट फॉर अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ अबाउट 6 to 8%, एंड वी डू होप दैट things remaining the way they are and improvement that we are seeing in commodity prices, we are cautiously optimistic that we should be able to at least be the lower end of the volume growth of 6 to 8%. And the EBITDA, the target that we have given per metric ton is the band of 16,000 to 18,000 per metric ton. And we do hope that we are able to be closer to the higher end of the EBITDA range that we have guided to. Okay, sure. So ये है वॉल्यूम और EBITDA के टारगेट्स या प्रोजेक्शंस। बट सर इंटरनेशनल बिजनेस सिंस इट कंट्रीब्यूट्स टू अ डिसेंट एक्सटेंट, मैं ये जानना चाहूँगी स्पेशली इन द मार्केट्स लाइक अमेरिका, इजिप्ट, टर्की, क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं? क्या डिमांड है वहाँ पर? वहाँ के मार्केट्स कैसा परफॉर्म करेंगे? So if you look at the Africa, Middle East, Turkey volumes last financial year was also pretty much down by almost 15%, but that was more supply led because a lot of operational constraints in terms of international logistics. Getting material into Egypt was a big issue. That does continue, but the added issue that we have in the current year is the commodity price inflation. So we need to be waiting and watching whether this has impacted demand. The supply side seems to be improving in terms of logistics, but not to the desired levels to give us some room for comfort. So yes, I think that is a cause of concern, Africa, Middle East, Turkey volumes. We do hope that we are able to get back to the growth trajectory in the coming quarters. US and Europe have been growing pretty well, because if you'd see, my specialty care ingredients business is majorly focused into these developed markets. And we do see that that's something we hope that we are able to sustain the sort of growth we had last year. We've also grown India volumes by almost 9% last year. And yes, that is something that we would hope to be closer to the 9% target that we have, what we achieved last year. The commodity price and the geopolitical situation and the international logistics needs to be supportive. And we don't see any reason, if that happens, that why we can't repeat that performance.
ओके श्योर, तो ये जो कंसर्न्स हैं यही देखने पड़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिमांड। बट सर, क्या इस वक्त आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ स्लो डाउन आया है ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइंट्स, क्योंकि जैसा हम जानते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स दूसरी इकोनॉमीज में ज़्यादा है इंडिया से, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, तो उसके वजह से कुछ स्लो डाउन है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स? There is slowdown, but nothing. What I can say is that the at the same time last year, the sort of buoyancy that was there on the demand side is something that we are not seeing. We do see some, issues in some order position, but nothing to panic right now. But yes, as I said, we need to wait for a few more months to be able to understand as to what sort of trajectory the demand side is going to take across the globe. ओके श्योर, वेट एंड वॉच सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा इसको देख रहे हैं, फेयर इनफ सर। रॉ मटेरियल कॉस्ट के बारे में मैं ये जानना चाहूंगी, स्पेशली लॉरल अल्कोहल, क्या सिचुएशन है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर सर? वहां पर रॉ मटेरियल, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ बिग इंग्रेडिएंट टू योर प्रोडक्ट्स, तो उस पर क्या व्यू है सर? Yeah, raw materials. See, if you look at low alcohol prices are essentially driven by the palm oil complex. So the entire palm oil complex has corrected significantly by almost close to 30-40% over the last 45 days. That's good in a way in terms of ensuring that we are able to have raw material prices at manageable levels. But it also adds the sort of volatility that is there, because it's not something as a trend that we are able to see will sustain. So we need to be watching this space as well. But what is important given this volatile scenario is that we need to be managing our feedstock risk in a very, very agile way and in a smart manner. And yes, that's going to be one important aspect of the way we manage business this year. But yes, the corrections have happened. We do hope that they sustain and continue this trend. And that will be good in terms of getting the prices to manageable levels at the consumer end. यूजुअली हम देखते हैं जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी बढ़ते हैं बट डिमांड को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें तो भी प्राइस हाइक्स तो लेना इनएविटेबल होता है। क्या सर कुछ प्राइस हाइक्स जो आपने पहले लिए हैं आर दे इनफ, और कुछ इन द ऑफिंग है, या यू थिंक अभी स्टेबल रहेंगे? प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है सर? No, prices obviously are determined by the feedstock prices, so they need to move in sympathy with how the feedstock moves. But there is always a lag in terms of the passing on price increases and any price corrections, typically 2 to 3 months. And yes, we've been able to do that in a more or less fair manner. It's also important that we are able to ensure that the demand side is kept robust, okay, in term, given the current situation that we are in. But yes, I think we are, able to ensure that we are able to keep the prices moving in line with the feedstock prices movement. मिस्टर नटराजन, एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, इस वक्त आपके पास कितने पेटेंट्स हैं और कितने अंडर रजिस्ट्रेशन है, उस पर हमें अपडेट देंगे? Oh, we have almost upwards of 80 patents, both international and India, and we have almost 15 to 20 patents which have been filed and waiting to be awarded. Okay, sure. Fair enough. So that's the number important to be factored in. Sir, 64% revenue मैं देख रही हूँ आपका आता है सर्फैक्टेंट से, 36% स्पेशलिटी केयर। क्या होगा आगे जाकर डिजायर्ड मिक्स? यू थिंक यहाँ पे कुछ ट्वीकिंग हो सकती है, कुछ चेंजेस होंगे, या यही ट्रेंड चलेगा? हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो दोनों बिजनेस को रो करना है, बोथ परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी केयर इंग्रेडिएंट्स. So typically, it's always been in this range of 65-35, 60-40. So depending on how the various markets grow and the demand situation, I think this can be fluctuating in this range. There's no way there can be any significant tweaking that would be possible, because we essentially want to serve the demand that is coming from both the legs of the market. ओके श्योर, सो दोनों ही बिजनेस ग्रो होंगे आगे, आपका ये मानना है? सर, पीएलआई स्कीम सरकार ने कुछ समय पहले एक इंडिकेशन दिया था सर्फैक्टेंट्स के लिए भी आ सकती है, क्या अपडेट है सर? वुड यू विश टू पार्टिसिपेट?
Oh yeah, sure. We in fact we would we are awaiting the government to be announcing the schemes. So that's something that'll be good for us to evaluate. And we anyway, I mean, growing our export business very significantly without the PLI scheme. And this PLI scheme is only going to further strengthen us in terms of our growth, growing our global business. So we are eagerly awaiting the government announcing the scheme. ओके श्योर, तो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट्स की वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे. क्विकली आखिरी सवाल सर, कैपेक्स आपका यूजुअली 150-200 करोड़ होता है एनुअली, जो आउटले आप करते हैं. इस साल के लिए भी यही नंबर है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस वक्त कैसी है सर? Yeah, so this year also we'll be expending around 150 to 200 crores for the various projects that we have rolled out. And capacity utilization is around 65 to 70%, and that would probably remain in the similar zone, a little bit higher as we move forward. ओके श्योर सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया और हमारे सवालों के जवाब दिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.